Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. In the previous lectures, we have started how to balance the chemical reactions. So now first step we have seen that first we have to compare the number of elements of each atoms on the both sides as shown in the uh, page number 34 and table number second from the लास्ट से जो सेकेंड टेबल है जो यहाँ पे शो किया है। तो क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वी कंपेयर द atoms of each element in the reactant side as well as on the product side. तो here on comparison we found that comparison करने के बाद क्या मिला कि the atoms of element sodium are not same. Now on reactant side there is one sodium and on the product side there is the two sodium, and the oxygen and sulfur, these two elements atom are equal and hydrogen is not same. So now step number 2 we have to check it, then we have to select the balancing that elements, balancing that compound which have the maximum number of the atoms. So now in this case the sodium to be balanced, and in this sodium there are the three different types of the elements: sodium element, oxygen element and hydrogen element. ये तीन एलिमेंट है. Now on the right hand side, since there are the two sodium, तो here we have to write the 2. यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए 2. Now when we write the 2 here, जब हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 2, क्या लिखते हैं 2, तो what happens, the sodium become balance, sodium balance हो जाता है, and oxygen, total oxygen now will become 2 oxygen and 4 oxygen, total 6 oxygen are there. But on right side oxygen numbers are 4. So now when we balance the sodium, now oxygen is become disbalance. Now about the hydrogen, now see there are the total 2 and 2, 4 hydrogens, and here there are the 2 hydrogens. So now in next step we will balance the oxygen atom. Earlier oxygen was balanced, but when we started balancing the sodium, the oxygen become disbalanced. So now we get the partially balanced equation in between these steps. ये स्टेप में ऐसे हम लोगों को मिलता है. अब देखो कैसे इसने किया. यहाँ पे initially the sodium is only one atom in the reactant side. तो reactant side में it is present in the sodium hydroxide. ये sodium hydroxide में present है. NaOH में Na है ना, Na है. In the product side the sodium is present as Na2SO4, Na2SO4. So there are the two sodium atom. Now to balance, now see this reactant side, it have the two, the reactant side it have the two sodium atom. So now one to be converted into 2, that's why 1 should be multiplied by 2. 1 को 2 से multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंस. So now this 2 will come toward the reactant side as a prefix, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साइड में क्या आएगा, प्रीफिक्स की तरह ही रहेगा. स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 इज नाउ कंप्लीटेड. अब ये कंप्लीट हो गया. नाउ स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, now when we balance the sodium, so what happens, the other element, some other element got disbalanced. Now again we have to compare which element is disbalanced. Now the sodium become equal, oxygen is 6 and here 5, hydrogen is 4 and 2, and sulfur is 1 and 1. Now here the oxygen 1 less toward the right hand side, means toward the product side. तो क्या करेंगे अभी, we will balance the oxygen, we will balance the oxygen, और
hydrogen are 4 and here hydrogen are 2. Now see the reactant side have the 4 hydrogen, but product side have the 2 hydrogen. So here the 4 hydrogens are present in the different molecules in the reactants. For example, sodium hydroxide, there is only one. There is now two hydrogen, and 2 hydrogens are present in the sulfuric acid H2SO4. 2 हाइड्रोजन किधर प्रेजेंट है NaOH में. देखो ये पार्शियली बैलेंस इक्वेशन जो 10 है ये 2 है ना, तो 2 यानी के पहले भी है, 2 ऑक्सीजन के पहले भी है, 2 हाइड्रोजन के पहले है. तो रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है? टोटल 4. And reactants product side have the only 2 hydrogen. Now we will write the 2 before the H2O, because hydrogen is only present in the molecule of the H2O water molecule. So now we have to make 2 4. 2 को क्या करना है? 4 बनाना है. तो 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे, then it will become the 2 2 is 4. तो here we will write the 4. यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे. तो क्या हो गया? नाउ अगेन वी विल चेक इट, अगेन फिर से चेक करेंगे. नाउ सी द 2 सोडियम 2 सोडियम 1 सल्फर 1 सल्फर 2 plus 4 6 oxygen, either 4 and these 2 4 and 2 is 6 oxygen. Hydrogen, now hydrogen 2 hydrogen and sorry not 2 hydrogen, 2 hydrogen in the NOH and 2 hydrogen in the sulfuric acid. तो 2 2 become 4 and 2 2 जा 4. यहाँ पे देखो जो कोएफिशिएंट है 2 है and जो सबस्क्रिप्ट लिखा है सबस्क्रिप्ट इज आल्सो 2, तो 2 2 जा 4. तो देयर आर टोटल 4 हाइड्रोजन. नाउ ईच एंड एवरी एलिमेंट बिकम बैलेंस. हर एक क्या हो गया? जो एलिमेंट्स है वो बैलेंस हो गया. नाउ आफ्टर बैलेंसिंग वी हैव टू राइट डाउन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट. उसके बाद में फिजिकल स्टेट्स भी क्या करना है? मेंशन करना है. नाउ सी द सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सी स्टेट में होगा? लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन. and H2SO4 is in aqueous solution. Sodium sulfate is in aqueous solution and the water is also in liquid state. In this way we have to balance the equation from the unbalanced equation by applying the proper factor. But when the question is related to balance the chemical equation, okay, and the steps are not asked, if steps are not asked then you have to balance directly. But if it is asked what are the steps to balance the chemical equation, then you have to write each and every step. Now the type of the chemical reaction. Next part is the type of the chemical reaction. The chemical reactions are classified into the following 4 types in accordance with the nature and the nature of the reactant and product. The chemical reactions classified on the basis of the nature and the number of the reactant and product. अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हम लर्न करने जा रहे हैं, दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द number of reactant and number of product and the nature. Now combination reaction. What is meant by combine? Combine means what? If the two things are separate, to mix them, it's called combination. Combine, to combine. Okay, अगर दो अलग अलग चीज़ें हैं उसको मिक्स करने को क्या बोलते हैं? कंबाइन करना. तो सिमिलरली in a chemical reaction, if the number of reactants are 2 or more than 2, if the number of reactants are 2 or more than 2 and we obtain the only single product, such type of reactions are called combination reaction. ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होता है? प्रोडक्ट सिंगल बनता है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, but number of reactants are more than 2 or 2 or more than 2, then it is called as the combination reaction. For example, when you write 4 plus 4 plus 6, 4 plus 4 plus 6, the 4 plus 4 8, 8 plus 6 is equals to 14. क्या होगा? 14. So now the 4 4 and 6 is combined
and get converted into the single number 14 और सिंगल नंबर 14 में कन्वर्ट हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन है। क्या है ये? कॉम्बिनेशन है। इट्स क्लियर नाउ? नाउ सी द activity related to the combination reaction. Apparatus required for this activity: test tube, glass rod, beaker, etc. And the chemical required for this activity: hydrochloric acid. Hydrochloric acid means what? HCl, and ammonia solution. Ammonia solution means NH3, and slack lime. Slack lime means what? Calcium hydroxide. Calcium hydroxide, etc. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट? इसमें क्या क्या केमिकल्स रिक्वायर्ड है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनिया सॉल्यूशन एंड द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, दैट इज स्लैक लाइम। इसको हम क्या बोलते हैं? स्लैक लाइम। Now what we have to do here in this activity, take a small amount of the hydrochloric acid in test tube. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें से थोड़ा सा अमाउंट क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब में निकाल लेंगे। हीट द टेस्ट ट्यूब, dip the glass rod in the ammonia solution and hold on the top of the test tube. You will observe a white smoke emanating from the tip of the glass rod. So in this activity what you have to do, you have to take the a small amount of the hydrochloric acid in test tube. टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। हीट द टेस्ट ट्यूब एंड देन यू हैव टू हीट द टेस्ट ट्यूब। डिप ए ग्लास रॉड इन द अमोनियम सॉल्यूशन। अब अमोनिया का जो सॉल्यूशन उसमें ग्लास रॉड को क्या करना? डिप करना है। एंड होल्ड ऑन द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और उसके बाद में जो टेस्ट ट्यूब है उसके टॉप पे उसको होल्ड करके रखना है। यू विल ऑब्जर्व द वाइट स्मोक एमिनेटिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्लास ट्यूब। तो क्या मिलेगा आपको कि जो है एक वाइट स्मोक उसमें से बाहर निकलते हुए दिखाई देगा। what must be happened? क्या हुआ होगा? and because of that there is a formation of the white smoke. ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से वहाँ पे वाइट स्मोक बना होगा? now in this paragraph you will find the answer. Due to heating, HCl vapor started coming out from the test tube. Now sodium hydroxide, hydrochloric acid to be heated in this activity. So when the HCl is heated, its vapor start coming out from the test tube and NH3 gas come out from the solution on the glass rod. और जो NH3 गैस है वो कहाँ से आ रहा है? अमोनिया के सॉल्यूशन से आ रहा है जो ग्लास रॉड से हमने लिया है। The ammonia gas and hydrogen chloride gas reacted to form the salt ammonium chloride. तो अमोनिया गैस और जो हाइड्रोजन क्लोराइड है both react with each other and form the salt ammonium chloride in gaseous state. और वो अमोनियम क्लोराइड कौन से स्टेट में मिलता है? gaseous state first, but immediately due to the condensation process at room temperature it got transformed into the solid state. तो क्या हो जाता है? after a while, कुछ ही टाइम में क्या हो जाता है? that get converted into the solid state. As a result, white smoke was formed, and because of that there is a formation of the white smoke. The chemical equation for this is as follows, और इसका chemical equation दिया है as here is equation number 12. Ammonia NH3 plus HCl hydrochloric acid and form the ammonium chloride, and this is its solid state. Ammonia is gaseous in state, HCl is gaseous state, and the ammonium chloride is the solid state. Activity number 2. Hold a magnesium strip in pair of the tongue and ignite. On burning in air, a white powder of the magnesium oxide is formed. The reaction can be written in the form of the equation as shown below. Now here in this what we have to do, we have to take the magnesium ribbon, means a metal piece like ribbon that made up of magnesium, that we have to take with the help of the pair of tongue. जो चमटा होता है उस चमटे की हेल्प से लेंगे। On burning in air, a white powder of ammonium oxide will form. Now this metal magnesium will react with the oxygen available in the atmosphere on burning.
The reaction can be written in the form of the equation as shown below. Mg, Mg is the symbol for the magnesium. O2, O2 is the oxygen molecule and form the magnesium oxide. Now see there are the two reactant. Here there are the two reactant and product is only one. Now see, if some student get confused that here 2 is written. If here 2 is written, it means the two molecule of the magnesium oxide. If it is 2 is written, then it is 2 molecule of the magnesium oxide. It is not the two different product. It is same. The quantity is more. अगर 2 3 लिखा है before the any molecule, it means what? It means the quantity is more. Quantity ज़्यादा है. It is not different. And if it will be different, then they will be separated by the positive sign. अगर वो अलग अलग होंगे product, they will be separated by the positive sign. Remember this. So now see carefully. Mg is first reactant, oxygen is second reactant, and these two combines and give the magnesium oxide, which is the single product. So this is the reaction where combination of the magnesium and oxygen brought about the magnesium oxide. Now activity number 3. Take water in a beaker up to half of its capacity. अब क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसकी कैपेसिटी के हाफ वाटर उसमें फिल करना है. Add few pieces of the slack lime. Add few pieces of the slack lime, calcium oxide. Now here there is a one mistake. The few pieces of quick lime, calcium oxide is called the quick lime. तो do correction here. यहाँ पे आपको करेक्शन करना है. क्या दिया है? स्लैग की जगह पे क्या आएगा? क्विक. इसको आपको क्या कर देना है? स्लैग को हटा के क्या करना है? क्विक. QUICK, क्विक. क्या लिखना है? क्विक. QUICK, क्विक. क्विक लाइम. क्विक लाइम इज नथिंग बट द कैल्शियम ऑक्साइड. वही कैल्शियम ऑक्साइड है. Calcium hydroxide is formed by combination of the calcium oxide and water with the generation of the large amount of the heat. Calcium oxide react with the water and form the calcium hydroxide. So here there are the two reactant and product is only one. यहाँ पे भी दो reactant है और product क्या है? one है. So this is example of the combination reaction. Now see the definition of the combination reaction. Combination reaction, when two or more reactant combine in the reaction to form a single product is called the combination reaction. तो जब क्या होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है दो रिएक्टेंट और मोर देन टू रिएक्टेंट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. So what is the definition? When the two or more reactant combines in a reaction to form a single product, it is called a combination reaction. तो उसको हम क्या बोलते हैं? combination reaction. Clear हो गया स्टूडेंट? तो this classification is based on the number of the reactant and number of the product. कितना reactant है, कितना product है, उसके ऊपर ये based है. Now second type of the reaction is called as the decomposition reaction. जो second reaction है उसका क्या नाम है? Decomposition reaction. So this is exactly opposite of the combination reaction. In combination reaction what happens? The reactants are two or more than two and product is single. So this reaction, decomposition reaction, is exactly opposite of the combination reaction. So what happens in decomposition reaction? The reactant is one and the products are two or more than two.
रिएक्टेंट क्या होंगे, रिएक्टेंट वन होगा, सिंगल रिएक्टेंट विल बी देयर बट प्रोडक्ट विल बी टू और मोर देन टू. So this is the decomposition reaction. Now see that for trying the activity we need the following things: the apparatus, evaporating dish, Bunsen's burner, and the chemicals: sugar, calcium carbonate, sulfuric acid, etc. केमिकल्स में क्या क्या लगेगा, सुगर, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा. प्रोसीजर: take some sugar in an evaporating dish and heat it with the help of the Bunsen's burner. After some time you will see the formation of the burnt out black substance. Exactly what must have happened in this activity. अब क्या बोला है, टेक सम शुगर इन इवापोरेटिंग डिश. इवापोरेटिंग डिश में क्या करना है, आपको शुगर लेना है एंड हीट इट विद द हेल्प ऑफ बंसेंस बर्नर, और बर्नर पे रख के क्या करना है, उसको हीट करना है. आफ्टर सम टाइम द वाटर विल इवापोरेट एंड यू विल फाइंड द ब्लैक सब्सटेंसेस लेफ्ट on the evaporating dish. Exactly what must have happened in this activity? What depends on heating, the water evaporate and the dissolved sugar contain the carbon, and that carbon on charring, on burning, converted into the black color. So in above activity, a single reactant sugar is divided into the two substance कार्बन एंड वाटर. तो जब हम लोग क्या करते हैं, शुगर को हीट करते हैं तो वो दो कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है. फर्स्ट इज कार्बन, सेकंड इज द वाटर. नाउ कार्बन इज इन स्टेट ऑफ द सॉलिड, वो सॉलिड स्टेट में होता है. दैट्स व्हाई इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द इवापोरेटिंग डिश एंड ब्लैक कलर सब्सटेंस अपीयर्ड. बट वाटर lost in the form of the vapor, that's why it is not seen. The reaction in which there is only one reactant giving rise to two or more product is called the decomposition reaction. ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या है, एक ही रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट क्या है, टू और मोर देन टू, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इट्स क्लियर नाउ स्टूडेंट, क्लियर हो गया. दो रिएक्शंस हम लोगों ने लर्न कर लिया, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये दो रिएक्शंस हम लोगों ने देख लिए. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, अब क्या करना है, टू अंडरस्टैंड द थर्ड टाइप ऑफ द रिएक्शन वी हैव टू डू द दिस फॉलोइंग एक्टिविटी. इस फॉलोइंग एक्टिविटी को क्या करना है, करना है. Try this. Now the apparatus required for this activity are two test tubes, bend tube, rubber cork, burner, etc. Now see, these are the two test tubes. The test tubes है and this is the bend tube. ये क्या है, bend tube है, bend है इसलिए इसका नाम bend tube है. And the cork, अब ये देखो, ये रबर के क्या है, कॉर्क, जो इसके माउथ पे अटैच है. ये क्या है, ये क्या है, ये रबर का क्या है, कॉर्क है, जो उसमें टाइटली फिट हो रहा है. एंड द बर्नर, नाउ सी द बर्नर इज यूज फॉर हीटिंग द सॉल्यूशन. केमिकल्स: कैल्शियम कार्बोनेट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट, freshly prepared lime water, these required chemicals. Now procedure, what to do exactly in this activity. Take some calcium carbonate in a test tube. Take some calcium carbonate in test tube. Fill a bend tube to this test tube. Fit a bend tube to this test tube with the help of the rubber cork. Insert the other end of the bent tube in the freshly prepared lime water taken in other test tube. क्या बोला है कि हम लोगों को एक टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, फिर उसमें बेंड ट्यूब को फिट कर देना है एंड रबर कॉक से उसको फिट करके एकदम टाइट कर देना है. देन इंसर्ट द अदर एंड ऑफ द बेंड ट्यूब इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर
और यहाँ पे लाइम वाटर, चूने का पानी, जो इमीडिएटली बनाया हो, उसको दूसरे ट्यूब में लेना है और उस बेंड ट्यूब का दूसरा एंड जो है इसके अंदर इंसर्ट कर देना है. Heat the powdered calcium carbonate. Heat the powdered calcium carbonate in the first stage tube strongly. The lime water will turn milky. अब क्या करना है हम लोगों को, जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको स्ट्रांगली हीट करना है. एंड देन वी हैव टू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. द लाइम वाटर में टर्न्स मिल्की. तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है, मिल्क की तरह हो जाता है. So why does this happen? Because there is a formation of the carbon dioxide gas, and carbon dioxide gas react with the calcium hydroxide and it form the insoluble calcium carbonate, and because of that we see the white precipitate. We saw in the above activity that calcium carbonate undergo decomposition reaction and the carbon dioxide gas formed turns the lime water milky. The second product of the reaction, the calcium oxide powder, remained behind in the first test tube. Similarly, in another reaction, equation number 17, hydrogen peroxide naturally undergoes slow decomposition into the water and oxygen. Now see the first reaction, calcium carbonate on heating broken down into the calcium oxide and the carbon dioxide. यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे दो चीज़ें फॉर्म हो रही, दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. In second reaction, that is the 16th reaction, the hydrogen peroxide. Now see the formula of the hydrogen peroxide, H2O2. क्या फार्मूला है, H2O2. वाटर की तरह दिख रहा ना, H2O. H2O is the formula of the water, but H2O2 is not water. H2O2 is called hydrogen peroxide, and the two water molecule is released and one oxygen is evolved. So these two reactions are also example of the decomposition reaction. Now see the next reaction, electrolytic decomposition of the water. We have studied in the previous standard that water decomposes into the hydrogen and oxygen gas on passing electric current through the acidilated water. The decomposition takes place by means of the electric energy, therefore it is called the electrolysis, because water is broken down into the hydrogen and oxygen with the help of the electric current. That's why it is called as the electrolysis. Now see the reaction, 2H2O, electric energy giving to water and oxygen. So these are the example of the decomposition reaction. Here product is 1, remember this, and the reactants are 2. Okay student, if anybody having any doubt, ask to me, then I will end the meeting. Zara, Abedin, do you have any problem? Okay, understood now what is the combination reaction, what is the decomposition reaction. Okay, now I am ending the meeting because the teacher, your Nafisa miss, have to start the meeting.